To explain you the chapter The Silver Lining. Before explaining the chapter, I would like to tell you a few words about the author. Girls, this chapter The Silver Lining is a short story written by Dr. Chaman Nahal. He was born in Sialkot and he is the author of novels. He has also written articles, reviews and works on criticism. The Silver Lining is taken from a volume of short stories, The Weird Dance. Girls, the author said that no one can judge people whether they are happy or sad internally. As in chapter Silver Lining, he has described the family of Mr. Ahad who are internally sad but looks happy. So I am going to start the story. Mr. and Mrs. Ahad are the owner of the guest house in one of the hill resorts. Once Mr. Nadeem experienced of staying there as one of his friends suggested the place. The guest house centrally situated as all the facilities were nearby. For example, bus stop, markets, etc. The views were too pleasant. When he reached there, he was welcomed by the landlady, Mrs. Ahad, with pleasant face and all smiles. The husband was also very well mannered. Mrs. Ahad looked after luggage and gave him instructions about regarding room and entertained with a cup of delicious coffee. They eased him by talking informally, and he was mingled with them as he knows them for years. While chatting, he saw a sweet, charming girl of about 8 years named Mahin. She was hiding herself behind settee, staring at the guest. When the man tried to come close to the girl, she ran outside, and when the man looked at her parents' looks painful. Mr. Ahad apologized Mr. Nadeem for his daughter's act and shared about their daughter that she is deaf and dumb, means can't hear and can't speak. The man felt sorry for that. Mr. Nadeem realized the parents' situation, that daily guests visit their guest house and have many questions in their mind. They have queries in their mind regarding a girl, and they have to answer about the disability of Mahin, and this becomes very embarrassment for the parents as well as the girl. To save the child from such repeat humiliation, Mr. Nadeem suggested to have bits of paper and mention the problem of their daughter as it hurts Mahin. One day, there was a guest named Mr. David, who was also deaf and dumb. But Mrs. Ahad's family and Mr. Nadeem was not known about this. When he read a chit, he looked around. Mahin was playing in the courtyard. Mr. David smiled and went towards Mahin. Looking this, Mr. Ahad gets angry, as in the chit it was mentioned all about her daughter. Still the young man ignored her request and went towards her daughter. After a few minutes, when Mr. and Mrs. Ahad and Mr. Nadeem went to courtyard, they were surprised to see that Mr. David was sitting on the grassy ground and Mahin was sitting on his lap and Mahin was laughing. Parents were surprised to see this, as they have never seen their daughter laughing like this for years. Girls, when she saw that she saw her parents, she came towards her mother and started dancing. She started making a sound, ma, 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 pointing her finger wildly to Mr. David. This was a turning point that all of them realized that Mr. David is also deaf and dumb. The parents apologized him and started talking with half sentences and the rest in gesture. But the young man can understand as he appeared to read their lips.
For some of the complicated answer, he used pen and paper, while for others he shook his head or nodded for reply. Next day, Mrs. Ahad was full of news as she mentioned Mr. David and the plans for the betterment of Maheen. Mr. David told them that he himself educated in school abroad and had now returned back to utilize the same useful service to others by starting a school here, and he agreed to accept Maheen as his first student. Hearing this news, the Mrs. Ahad looked the happiest woman in the world. Thus, this is all the story. Now I am going to explain this a little in Urdu. बेटा ये स्टोरी जो है वो एक्चुअली मिस्टर आहद और मिसेस आहद के गिर्द घूम रही है और उनकी बेटी माहिन जो मेन रोल है, और ये बता रहे हैं ऑथर के कोई भी हम जज नहीं कर सकते किसी भी इंसान को शक्ल देख कर के वो कितना हैप्पी है इंटरनली या कितना दुखी है। जैसे मिस्टर और मिसेस आहद की फैमिली जो है वो एक गेस्ट हाउस चला रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हिली स्टेशन पर है और इनको काफ़ी अच्छा इनका हो रहा है। वहाँ पे एक मिस्टर नदीम आते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि उनके दोस्त ने उनको कहा था कि यहाँ पे आप जाना, यहाँ पे सारे व्यूज़ भी अच्छे हैं और मार्केट्स और शॉप्स वगैरह सारी नियर हैं। मिस्टर नदीम जो है वो जब वहाँ पे पहुँचे तो मिसेस आहद जो है वो बहुत अपने स्माइली फेस के साथ उनके पास आई, इनका लगेज वगैरह इन्होंने हैंडल किया, इनको रूम वगैरह बताया, जबकि इनके हस्बैंड जो मिस्टर आहद हैं वो भी काफ़ी वेल मैनर्ड थे। उन्होंने जो है इनको एंटरटेन किया सबसे पहले कप डिलीशियस कॉफ़ी से, और इनको जो है वो उनके साथ बातचीत इस तरह करी कि उन्होंने मिस्टर नदीम ऐसे महसूस करने लगे कि उनको कई सालों से जानते हैं। जब वो बातें कर रहे थे तो उनकी नज़र मिस्टर नदीम की नज़र एक लड़की पे पड़ी जो कि अपने आप को जो 8 साल तक की तकरीबन लग रही थी, जिसका नाम माहीन था, और वो सेटी के पीछे छुपकर गेस्ट को देख रही थी, मिस्टर नदीम को देख रही थी। फिर जब वो मिस्टर नदीम ने उनकी तरफ देखा, उनकी तरफ देखकर उनकी तरफ मुस्कुराए तो माहीन जो है वो कमरे से बाहर चली गई। जब माहीन बाहर चली गई तो उनके पेरेंट्स को जो है ना बड़ा एम्बेरसमेंट फ़ील हुआ और उन्होंने मिस्टर नदीम से जो है वो अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी कि भाई इनकी बेटी जो है वो बताया उनको डिटेल के डेफ और डम है तो वो इस तरह अजनबियों से फ़ौरन नहीं मिलती। फिर मिस्टर नदीम को जो है वो रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से इनके पेरेंट्स को रोज़ इस तरह से, चूँकि गेस्ट हाउस है तो बहुत सारे गेस्ट आते होंगे, आ जाते होंगे, तो हर कोई गेस्ट जो है वो इस बच्ची की तरफ अट्रैक्ट भी होता होगा क्योंकि बच्ची बड़ी प्यारी थी। लेकिन जब वो अट्रैक्ट होते होंगे और बच्ची इस तरह से बिहेव करती होगी तो उनके पेरेंट्स को कितनी एम्बेरसमेंट होती होगी, कितना दुख होता होगा, तकलीफ़ होती होगी रोज़ आना, क्योंकि उनकी बेटी की डिसेबिलिटी जो थी वो इनको तकलीफ़ देती थी और उनको रोज़ जो है इस से गुज़रना पड़ता था। तो मिस्टर नदीम ने उनको एक आइडिया दिया कि आप ऐसा करें, एक चिट पे लिख के दें अपनी बेटी का प्रॉब्लम और कहें कि वो इस तरह से किसी भी अजनबी को जो है वो इजाज़त नहीं कि वो बेटी को इस तरीके से वो फ़ौरन से मिक्सअप नहीं होती है। तो मेरी बेटी जो है वो, तो उन्होंने जो है वो इस आइडिया पे काम किया। इस तरह से काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट मिला। फिर एक दिन जो है एक अजनबी आया, मिस्टर डेविड इनका नाम था, और वो बहुत ही मतलब उसका थका हुआ हुलिया था और वो जो है वो जैसे ही दाखिल हुआ तो उनसे जो है वो रूम वगैरह शेयरिंग वगैरह की बातें हुई। अच्छा, अब मिस्टर डेविड जो है मैं आपको बताती चलूँ वो भी डेफ और डम थे, वो भी ना सुन सकते थे ना बोल सकते थे। उन्होंने वो चिट पढ़ी और चिट पढ़ने के बाद उन्होंने जो है वो माहीन को ढूंढना शुरू किया। वो माहीन की तरफ जब इनकी नज़र पड़ी, माहीन जो है वो सहन में खेल रही थी। मिस्टर डेविड जो है वो चिट की जो रिक्वेस्ट थी मिस्टर आहद और मिसेस आहद की तरफ से, उन्होंने इसको इग्नोर किया और वो सीधा माहीन की तरफ गए, जिससे मिस्टर आहद जो है उनको उनको बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा कि इतनी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज किया और वो उनकी बेटी की तरफ चले गए। कुछ मिनट के बाद जब वो बाहर गए सहन की तरफ और मिस्टर नदीम भी साथ में थे तो उन्होंने देखा कि बेटी जो है उनकी, वो बड़े शॉक हुए, मतलब बड़े सरप्राइज़ हुए, खुशी हुई उनको कि वो मिस्टर डेविड के साथ बैठी है घास पे और वो जो है वो उनकी गोद में बैठी हुई है, मिस्टर डेविड की गोद में, और हंस रही है। पेरेंट्स जो है वो ये देखकर बड़े सरप्राइज़ हुए कि मेरी बेटी इससे पहले इतने सालों में इस तरह से कभी नहीं हंसी।
جب بیٹی کی نظر اپنی ماں پہ پڑی تو وہ خوشی خوشی گئی اور اس کی چونکہ وہ بول نہیں سکتی تھی کمپلیٹ سینٹینسز، تو وہ ماں ماں کر کے اس کی طرف گئی اور اشاروں سے مسٹر ڈیوڈ کی طرف پوائنٹ کر رہی تھی۔ یہ زندگی کا ان کے لیے ایک اچھا لمحہ تھا جو، اور تب انہوں نے ریئلائز کیا کہ اس سے پہلے ان کو اس کا مسٹر ڈیوڈ کا جو ہے وہ رویہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ وہ جو بھی بول رہے تھے تو وہ رپلائی نہیں کر رہا تھا، تو وہ کچھ اور اس کے بارے میں اپنا نظریہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، مگر یہاں آ کر ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا اور ان کو سمجھ میں آیا کہ مسٹر ڈیوڈ خود بھی بول اور سن نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے ان کے پیرنٹس نے معافی مانگی اس سے، اور کچھ ہاف سینٹینسز میں اور کچھ اشاروں سے باتیں کی، مگر وہ آدمی جو ہے وہ ان کے لپس موومنٹ کے ذریعے سے سب کچھ سمجھ رہا تھا تقریباً، اور رپلائی کرنے کے لیے وہ کبھی سر میں ہاں کبھی نہ سر ہلا دیتا تھا، یا پھر کوئی لمبا سینٹینس ہوتا تھا تو وہ پین اینڈ پیپر یوز کرتا تھا۔ دوسرے دن مسز آحد کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا دن گزرا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا سارا مدعا رکھا ان کے سامنے، مسٹر ڈیوڈ کے سامنے، اپنی بیٹی کے پرابلمس اور اس کے بہتری کے لیے، کہ جیسے وہ سوچ رہی کہ ان کی بہتری کے لیے۔ پھر مسٹر ڈیوڈ نے کہا کہ میں خود ایک ایسے ادارے سے باہر سے پڑھ کے آیا ہوں جہاں پہ اس طرح سے ڈسیبل بچوں کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے، اور میں وہاں سے پڑھ کر اب پاکستان واپس آیا ہوں تاکہ میں اپنی یہ سروس یہاں آ کے جاری رکھ سکوں، ان بچوں کو تعلیم دے سکوں جو کہ ایسے ہیں۔ اور مسز احد کو یہ سن کے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایز اے فرسٹ اسٹوڈنٹ، پہلے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اپنی ماہین کو جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ یہ ان کے لیے اتنی خوش آئند بات تھی کہ مسز احد جو ہے وہ خوشی سے، ان کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کے خوش نصیب ترین جو ہے وہ لیڈی ہیں۔ تو یہ اسٹوری ہے، تو آپ کسی کو بھی ہم فیس سے ہم اس کو ریئلائز نہیں کر سکتے کہ کون کتنا خوش ہے اور کون کتنا دکھی ہے۔ تو دس واز آل دا اسٹوری، سو آئی ہیو شیئرڈ یو اباؤٹ، اینڈ ناؤ یو جسٹ گیو می دا feedback that how you feel that story and what you have understood in it. Thank you, beta.